certain kind of noise. Okay, so when we're introducing a certain kind of a noise, what happens is that कि हमारा loss किसी एक जगह fix नहीं होता, it keeps moving, and that helps us reach to much more generalization. कहते हैं generalize ज़्यादा अच्छा हो पाता है, कहते हैं बजाय कि overfit करने के ऊपर. So one of the mechanism they came up was called dropout. So what's a dropout is that in each layer we go and we toss a coin for every neuron in that layer, and we say कि इस न्यूरॉन की जितनी भी आउटपुट है उसको हम जीरो कर देते हैं. ठीक है. So what we do is that we go over a neuron, we toss a coin. If the coin says the tail, we keep it there. Otherwise, make it zero. Okay. So we do this. We can do this thing on every iteration. We can do this thing on every epoch. We can do this thing on every batch. That depends on us and the kind of capacity the layers. Sorry, the tools you're using will have. So what you can do is you can go on every neuron and say, your output go to the next layer or not. Okay, so think about there are 100 workers who are doing something, okay, and 50 of them never showed up. Okay, so you have this industry line where people are doing different kinds of work, and there were 100 workers, and 50 of the workers that day didn't show up. So what happened? The task they were doing would have to be done by some others. Okay. So suppose कर ले गाड़ी अगर कहते हैं गाड़ी के इंजन बना रहे थे और वो इंजन दूसरी लेयर में आगे कहीं जाना था, तो वो गाड़ी अब इंजन बनाने के लिए 100 लोग इकट्ठे बना रहे थे, उनसे 50 लोग बना रहे हैं. तो इसका मतलब है कि उनको अपनी रिस्पांसिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी, उनको अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी पड़ेगी, so that one day some other guy doesn't come, they can overtake the task also. So what it is that they say कि one network, one neuron should not become specialized, because specialized ना हो जाए. सही है. Why this specialization is important? Because you don't want कि सिर्फ वही न्यूरॉन जब फायर करे तो वो एक certain behavior exist करता हो. Okay, ठीक है. हम लोग अगर इस तरह का behavior इसे avoid करना चाहें तो याद होगा कि हमने कहा था कि हम लोग convolutions के जब हम नेटवर्क के अंदर पूरी करते हैं तो उसके अंदर ट्रांजिशन इनवेरिएंट आ रही थी. वो क्या रहा होता है कि हम कहते हैं नेटवर्क न्यूरॉन जो एक जगह फायर करना चाहिए आसपास फायर शायद कर सकता होगा. ठीक है, सही. So we are allowing, by doing the stochastic regularization, dropout as a stochastic regularization, we are allowing our networks, we are allowing our neurons to not to do just one work and take the responsibility of other neurons too. Okay. So this MI is a mask. Okay. The Bernoulli random variable, we toss a coin और जो सी output होगी उसको इससे multiply कर देंगे. Okay. बैक प्रोपगेशन के अंदर सिर्फ जो लोग ड्रॉप आउट नहीं हुए थे उन्हीं को अपडेट किया जाएगा, बाकी को अपडेट नहीं किया जाएगा. This is one of the examples. So this is a network. हमने अगर ड्रॉप आउट करें तो this is one of the possible dropouts that can happen. We can choose the probability also. We can say 0.5 probability कर दें या 0.75 कर दें. जब 0.75 probability करेंगे उसका मतलब ये है कि there is less chance कि ये चीज ड्रॉप आउट होगी, ज्यादा चांस है कि ये वहीं पे रहेगी. ठीक है. तो we can increase the number of neurons we can drop by changing this hyper parameter. तो ड्रॉप आउट की वजह से हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर और आ गया जो हमें जो कि हमारा डिजाइन इशू आ गया कि हमें ड्रॉप आउट कितना किया. तो अक्सर आप पेपर्स पढ़ेंगे तो उनमें अक्सर ये पैरामीटर गिवन होता है. अमूमी तौर पे लोग ज्यादा इस पे इतना कंसिडरेट नहीं करते, जैसे 0.5 या 0.34 इस तरह कुछ रख ले, 0.3 से 0.5 तक रख लेते हैं. ठीक है. It depends on how you want to do. अच्छा, इसका नुकसान भी, let me finish this and I will tell you इसका नुकसान क्या होता है. So general implementation of a dropout is this. So you have this data coming in, आप इसको dot product करते हैं and then you randomly make a mask and then you drop those. आप इनको drop कर देते हैं, you don't let them pass through. Okay. One of the easy way to do this kind of a decision is that you randomly generate करें, एक random number generate करें 0 से 1 के दरमियान, और अगर वो random number जो है if less than threshold, then you pick you pick one thing or you pick another one. Okay. Okay. So so this is the same case. This is the same. So we do this thing here, and then for the next layer we also do the same thing here. Okay. So this is our retraining time, reading the dropout. Okay. So this is again वो जो हम बात कर रहे थे कि we don't want to specialize anything. This is another way to show that. This is another way to look at stochastic dropout regularization. Sorry, stochastic regularization हो क्या रहा है? So this is a network you have. आपने एक दफा point toss किया तो this is a form you get. Another time you did, this is a form you get. Another time you did, this is a form you get.
So at any particular time, you might have one of the network in a memory. Okay, so जब आप बैक प्रोपेगेट करेंगे तो हो सकता है इस नेटवर्क की वजह से ये पहले अपडेट हो और ये अपडेट हो जाए. ठीक है. Okay, if this is not the input layer, suppose this input layer, this guy gets updated. Okay, another one, this H2 will get updated because of the input of a X2 only. Okay, in this case. Okay, so this H2 needs to think about कि X1 अगर मेरे पास information ना आए तो मैं X2 से information से क्या काम कर सकता हूँ. ठीक है. And this H2 has to consider कि अगर X2 ना मिल रहा हो तो मैं X1 से क्या information कर सकता हूँ. ठीक है. Similarly, this guy H1 has to think about कि अगर H2 available ना हो तो मैं कितना help कर सकता हूँ, कितना loss को कम कर सकता हूँ. ठीक है. सही है. तो one way, another way to look at this thing is that you have 1000 neurons, sorry, networks. आप अगर possible हो तो मैं 1000 different networks बना लूं, उन सब का ensemble बना लूं. ठीक है. तो मैं 1000 different networks बनाऊं, different designs ले लूं. ठीक है. different layers, different हर layers similar हो, बस हर layer के अंदर कभी neurons किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, and then I train them. Okay. ठीक है. And then I combine their information to generate one result. So I'm going to ensemble बना लूं. This will get something me similar results. ठीक है. Here I'm not doing that explicitly. ठीक है. I'm doing this thing with कहते हैं I'm doing this thing by using a dropout. Okay. Give me 1 second. I need to message your TS. Okay. So it's like having a large samples of models that share the parameters and you train them. Okay. So for example, this is total possible different kind of mass, and this is large number of networks training at the time. Dropout is a random one. We're not going to go to that. You can read it in your book. Okay. So what happened in the test time? Okay. Remember this thing. What is going on? So suppose कि layer है. So this neuron is only getting the value from this guy or this guy, or this guy or this guy, or this guy or this guy. Only two of them. It's not getting input from all of them. Okay. ठीक है. तो suppose करें कि sigmoid लगाया हुआ था यहाँ पे. Suppose करें कि हमने sigmoid लगाया हुआ था. अगर मैं sigmoid लगाया तो ये बंदा suppose करें 0.3 कहता है, ये 0.2 कहता है, ये 0.5. And they are all this guy. Okay. So it has to make a decision here. This is a sigmoid here. Also, it has to make a decision. They all have activation function as a decision. As activation, the sigmoid is an activation function. So अगर हम इसको देखें तो क्या यहाँ पे जो linear layer है वो कैसे काम करेगी? It would be W1 X1 पहले न्यूरॉन आ गया. ठीक है. प्लस W2 X2 plus so on plus W4 X4. Okay. Okay. Now due to the sigmoid, I'm saying these all guys are इनकी value 0 से 1 के दरमियान हो सकती है. ठीक है. इसकी भी this guy also, and all of the x's have a value from 0 to 1. Okay. Now only 2 are allowed at any time. Okay. Okay. So this resultant y, okay, this resultant y will have a range from 0 to 2. Saying this thing that w's are positive. मैं assume कर रहा हूँ अगर w's positive होंगे तो ये 0 से 2 के दरमियान हो सकता है. ठीक है. This should come information. So another way to think in this way is that suppose there are 4 people who are shouting. Okay. Okay. And only 2. So the recipient of the noise, the recipient of the sound, will only get the information from 2 and not 4 of them. Okay. So उसके level of acceptance of information जो है
वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। एंड दैट रिस्ट्रिक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन कि हमने कितने ड्रॉप किए, ठीक है। अगर हमने ड्रॉप 0 करेंगे तो 4 की आवाज सुन रहा होगा, अगर 2 करेंगे तो 2 की सुन रहा होगा, एंड सो ऑन. So during the testing time, what we do is that we multiply the output with T. Okay. Okay. We scale the activation. Okay. Okay. So we can, so testing time, inference time के दौरान मैं चाहता हूँ कि expected जो output है मेरी वो वैसी हो जैसी training time के ऊपर थी. अब testing time के दौरान I'm not doing any dropout. Remember that. Testing time के दौरान सब बात कर रहे हैं, ठीक है. So again, coming back to the same, suppose there is a mic there and there are 4 people who are shouting, but they are only allowed to shout 2 people at a time. तो स्पीकर जो साउंड माइक्रोफोन से सुन रहा है, जो दूसरे के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है माइक्रोफोन से सुन रहा है, is expecting certain bandwidth, certain sound level. Okay, ठीक है. Now at testing time all are allowed to shout. तो क्या होगा, उसके तो ये काम खराब हो गया, something wrong going around, सिस्टम खराब हो गया मेरा. तो उसे डैम्प करने के लिए we multiply with the probability कि ट्रेनिंग टाइम के दौरान हम लोग कितने न्यूरॉन्स को आगे बात करने देना चाह रहे थे. ओके, ठीक है. So this is a forward pass. Okay, ठीक है. Okay, during the training time, and this is a forward pass during the test time. Okay, okay. So problem is this thing, that means that we need to change our network according to dropout we used. Okay, so during the training time, if you use multiple dropouts, suppose करें कि 100 epochs के अंदर मैंने different dropout इस्तेमाल किया, 100 से 200 के दौरान different dropout इस्तेमाल कर लिया, then this guy cannot work in that function. Okay, ये काम करना उसका काम नहीं कर सकेगा, ठीक है. So to avoid this situation, what we do is that we take away the multiplication of P responsibility here. Instead, we start scaling during the training. We scale it up. Remember, P is from 0 to 1. Okay, so when we divide by small number to lesser number, we are actually scaling things up. Okay, okay. So we scale it up. Okay, instead of damping the sound down, damping the activation down, we actually scale it up here during the training. Okay. Any questions, guys? Still here? Sir, I was just having a question. Sir, in the case of training, while जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो ये तो हो सकता है कि जो न्यूरॉन हमने स्विच ऑफ किया है उसकी रिसेप्टिव फील्ड में हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो लर्न करना हो, तो इस केस में क्या होगा ड्रॉपआउट के साथ? Actually, dropout is random. So we do the dropout randomly. Okay. We do the dropout randomly. Number two. No, let me answer your question. Number one. We do it randomly. Okay. Okay. So that one neuron which is off today might be on in next iteration. Okay. Number one. Number two. What talk about the receptive field? See, receptive field of all the neurons at that level are the same. Okay. Okay. The receptive field of all the neurons in that level is the same. Even if you can convolutions की बात करें, the receptive field of all the neurons at that level is same. So dropping one will not going to affect the receptive field. It's just going to say कि इस receptive field में अगर एक न्यूरॉन पहले देख रहा था कि कहते हैं गाड़ी की लाइट्स और डियर की आंख में क्या फर्क होता है, तो कहते हैं 2 न्यूरॉन्स देना शुरू कर देंगे. Okay, sir. Thank you. Any other question? No. Okay. So forward. Okay. So it's a very common pattern to do that. So हम regularization इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और कहते हैं let me sir जी sir, one question about dropout. Yeah. सर dropout में ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारी कन्वर्जेंस भी लेट करे, लाइक ये लेट कन्वर्ज हो आपके depending upon the dropout, your attentions might be increased. So basically, there is no hard and fast rule about that. But if you are training 100 neurons and only 50 neurons are available at one time,
सपोज कर लें और आप ड्रॉप आउट जो है 50 का किया 0.5 का किया हुआ तो only 50 neurons are available and 50 neurons don't get updated. ठीक है, and let's assume that every neuron needs to be updated 100 sorry, so there are 100 neurons, only 50 neurons are allowed to speak at one time. ठीक है, and let's for sake of argument say that every neuron is at such a state कि उसको हमने 50 दफा 60 दफा अपडेट ना किया तो वो कहते हैं वो सही जगह पे नहीं पहुंचेगा. ठीक है, तो नॉट थिंकिंग अबाउट दिस लॉजिक, अगर मैं ड्रॉप आउट ना करूं तो मैं 60 आइटरेशन में वहां पहुंच जाऊंगा. सही है, मगर अगर ड्रॉप आउट करूंगा तो इवेंचुअली I will not be using only the 60. I will need 120 iterations to reach there. ठीक है, so my training time might increase. Okay, ठीक है, because number of neurons that are updated are less and every iteration, हर iteration में number of neurons जो update हो कम है. Okay, ठीक है, make sense? Yes sir, thank you. Okay, however, it's not as static. I mean, there's so many, there's such a large number of neurons and such a crazy things going around in there. I don't think so there's a formula. I did try to search for this कि कोई formula मिले जो मैं बता सकूं कि क्या exact effect क्या आता है. I couldn't find any exact formula. Okay. Okay sir. Okay. सर लास्ट स्लाइड में वो लास्ट स्लाइड में आपने जो कोड शो किया था उसके अंदर हम जब रैंडम नंबर जनरेट कर रहे होते हैं सर, चेंज नहीं हुई स्लाइड. हाँ जी, ये वाली. इसमें पहले आपने ये कहा था कि मतलब इसमें हम लेसर देन टी कर रहे हैं कि हमारे जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे प्रोबेबिलिटी से लेस होंगे. एक मतलब हम उनको पहले जनरेट करवा के तो उनको डिवाइड करके स्केल अप क्यों कर रहे हैं? मतलब पहले हम कह रहे हैं कि इससे कम जनरेट हो इस वैल्यू से नीचे और उसके बाद उनको नहीं आप जनरेट नहीं, हम लोग नंबर्स जनरेट नहीं दे. Okay, I will take you through what is going around. Okay, I will take you. Can you guys see the screen right now? Can you see the pen? Can you Yes, see me sir. writing something? Okay, so I'm going to choose a blue color so that I'm going to choose a blue color. So आपका that पॉइंटर विजिबल नहीं, वैसे राइटिंग विजिबल है. Okay, so have a look at what is this guy doing. Okay, so this guy here is doing what? Is generating a matrix रैंडम नंबर. of the shape in this form. Okay, Yes, sir. and that matrix has some numbers in it. Okay, so number here, number here, number here, some number. Okay, these numbers are from 0 to 1. These all of them are numbers from 0 to 1. Okay, then what is this guy doing? This is binarizing it. So when I say less than 0.5, what it does? It binarizes this guy. So इसका जो function का output आती है, that will be a binary matrix. Yes, sir. I will have a 0 somewhere, I will have 1, I will have a 0, I will have a 1, I will have a 0. Okay? ठीक है? And what is this guy doing? What this P does? When I multiply the P, this value becomes what? 0.5, 0, 0, 0.5. That's what is going around. Right. डिवाइड करना था Sorry? सर, डिवाइड करना था 0.5. Oh, my apologies. So it would be 1 over 0.5. Okay, so what do you get? 0, 2, 0, 0, 0, 2. I'm scaling it up. Okay. Is that good? Yes, That sir. answers your question? Yes, sir. Okay. So I'm going to move forward then. Okay, so stochastic regularization, basically we talk about, there are many stochastic regularizers. We're going to talk about the batch normalization in the next few slides.
Okay, stochastic normalization works really good. हम लोग इसको दोबारा देखेंगे जब हम लोग के de-noising countering orders देख रहे होंगे. तो हमने जो ideas अभी discuss किए हैं, not the dropout one, but how the regularization helps, how the stochastic regularization helps you reach the correct manifold. You're going to recover that during when covering the de-noising countering orders. Okay, so hopefully we'll reach there one. We'll reach there. कहते हैं जिस पेस से हम चल रहे हैं तो शायद पहुंचना मुश्किल हो जाए, but I'm hopeful we'll reach there. Okay, so better. So one more form we can do the regularization is augmentation. Okay, so one way to do the augmentation is this one, is that you take an image and you transform it. Okay, तो certain transformations में add कर दें ताकि आपका वो जो 10 पॉइंट थे आपने उसको आपने थोड़ा सा increase कर दिया. Okay, so remember we were having conversation कि जब हम लोग I can show you. So remember हम लोग कहते हैं regularization में क्या होता है कि आपके पास जो कर्व है वो certain points को fit करना शुरू कर देती है, ठीक है, और unseen points को नहीं वो capture कर पाती जो उसको करना चाहिए. So what if I can use my points and generate those points with certain noise in them, so you get certain variations in them. Okay, and that way I will increase the number of points. Okay, so मेरी capacity increase कर गई है. Capacity के अंदर से correct answer choose करने के लिए मेरी data set ज़्यादा बड़ा चाहिए. Data set मेरे पास बहुत बड़ा नहीं मौजूद. तो one way to overcome that is to do the data augmentation. And data augmentation क्या है? You take an image and you replicate it. Okay, replicate it after certain transformation. Okay, so for example, in images we know that objects remain objects if we flip them left to right. Okay, the cat will remain cat, car will remain car. Okay, so the objects which don't change with certain transformation, वो transformation apply करते हैं और उससे वो image generate करते हैं. We know that कि certain rotation से फर्क नहीं पड़ता, 0.1 rotation से, ठीक है, 10 degree rotation से, 5 degree rotation से images में फर्क नहीं पड़ेगा. तो we can have those kind of rotations for it to work in. We know that certain random noise, adding a certain random noise is not going to cause a problem. So we can add a certain random noise in the images so that they become robust to those kind of transformations. Okay, another one is to do a kind of a cropping and get the scaling. So assuming that the most of the objects are present in the center of an image, what you do is that you try to crop so that the center always remains there, and use that as a label. Okay, the problem is that sometimes if the objects are on the extreme sides, तो वहाँ मसला आना शुरू हो जाता है, ठीक है? Okay, someone's mic is on. Okay, so another form is to change the scaling of a color. Okay, हम उसको histogram position कर देंगे, कुछ और कर लें, ठीक है, उससे colors change हो जाएंगे. That will help us do the regularization. Okay, so possible transformations are translation, rotation, a bit of stretching. Stretching is scale थोड़ा सा increase कर दें. अगर आपके image जो था 100 by 100 का था, उसको करके 110 by 110 कर दें. But ट्रेनिंग की दौरान सिर्फ 100 by 100 का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा शेयरिंग ले आए, लेस डिस्टॉर्शंस कर दें, ठीक है. So you can do all those transformations which you think, all those augmentations and transformations which you think are not affect the mean decision boundaries. Okay, any यहाँ सवाल कोई पूछ रहे थे? मेरा क्वेश्चन है आपसे. बताएं. सर क्वेश्चन ये कि आपने कहा कि हम इमेज को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में तो हमारा मेन आइडिया यही होता है कि हम वो जो न्यूरल नेटवर्क है रिप्रेजेंटेशन लर्निंग करें, तो खुद से सब कुछ सीखे. तो जब हम इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके फिर CNN को दे रहे हैं, तो हमारा आइडिया डिफीट नहीं हो जाता है कि हम खुद से मॉडिफाई करके उधर दे रहे हैं, वो फिर उसके ऊपर सीखते हैं. If I have infinite amount of data, then I'll just use my data. Let me ask you, if I have your image, अगर आपका चेहरा हो मेरे पास, ठीक है, और मैंने फेस रिकग्निशन करनी हो और मेरे पास मैंने फेस रिकग्निशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि अच्छा देखें, इसकी अगर आंखों पे ऐनक भी बना दूँ तो तब भी चेहरा उसी का रहना चाहिए. अगर मैं इस पे मस्टैच भी ड्रॉ कर दूँ चेहरे के ऊपर, तभी चेहरा इसी का रहना चाहिए, ठीक है. अगर मैं हेयर स्टाइल चेंज करूं तभी नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है. One way to allow my network to overcome this is to provide more data to that.
Or one way to overcome is to apply those transformations over my existing data to create more data. Okay. तो तो सपोज करने की आपने ये सुबह के वक्त तस्वीर उतारी, उसके अंदर थोड़ा सा जो थी सिचुएशन काम थी, आपने कहा ये दोपहर के वक्त सिचुएशन ज्यादा होती है, ठीक है, तो either you take more images during the afternoon, or you do some kind of color transformations to make your image look like more of a sunny day images, and train your network on that. यानी सर हम ओरिजिनल डेटा वो भी इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल और जो Actually, ऑगमेंटेड डेटा हमें जनरेट किया वो भी Actually, let me give you an example. We actually learned this thing about 3 to 4 years back. We did an experiment where we trained our network over images, firearms के. We were initially working on that one, so we did this simple object data train कराया, जो कि हमने firearms के ऊपर train कराया था, और उसके results भी reasonable थे. Okay, a week after that, my RAs come back to me and say, results बहुत खराब हो गए. And वो कैसे खराब हो गए? We didn't did anything. Network वही है, सब कुछ वही है, और results बुरे हो गए. And I asked कि क्या हो क्या रहा है? And we were like kind of a guess कि हम क्या गलती की है. And we found out what has happened. What happened was that due to a certain reason we had to change the hard drive. So we had to copy the data. जब हमने डेटा कॉपी करने लगे तो डेटा बहुत बड़ा था, तो what one of our RAs did was he converted everything JPEG and then copied that thing to the hard drive. Okay, and that data was being used for testing, and we realized कि JPEG की compression होती है, और JPEG की compression की, और जो हमारे ऐसा ट्रेनिंग इमेजेस में compression नहीं थी, नॉइज बहुत साफ थे, बड़े हाई क्वालिटी के थे. So having that noise in that JPEG compression, जबकि इंसान आराम से देख बता पाता है कि ये फायरआर्म है, वहां पे कोई चेंज नहीं आया. एक ही इमेज JPEG compression से रिजल्ट था, उसके ऊपर रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, और जिसके ऊपर JPEG compression नहीं की, उसके ऊपर रिजल्ट अच्छे आ रहे थे. Now how to overcome this thing? The one way to overcome this thing is that to the kind of artifacts you get in the compression, artifacts in your images automatically during the training, so that your model is able to handle those kind of noises during the testing or inference time. Thank you. Okay, so the basic regression techniques we talked about the dropout, we didn't talk about drop connect. I'm not going to talk about the fraction max pooling. We're not going to talk about the stochastic depth. You guys can read those in your own time. Okay, I'm talking about ensembles. Okay, so what are the ensemble learning? So mostly what happens is that even when these large networks, if you go to the papers, अगर आप papers go to करेंगे, image classification के DenseNet, VGG, Inception, these guys will be reporting their results on something called ImageNet. Or the results report on ImageNet has certain standards. Okay, किस तरह report करना है, जो भी सब follow करते हैं, standard protocol होता है उसको करने का. But then they will start reporting 5 networks, 1 network, 2 networks, certain those things, and you say what is going on. So what they do is this thing. They take certain set of images X, and then they train a network on it. Okay, and network is trained on certain random initializations. किसी का random initialize किया, उसके ऊपर train कर लिया आपने, ठीक है, certain set of data के ऊपर, ठीक है, आपने उसी data को लिया और एक और network train करा दिया with certain small variations. Okay, one of the variation could be just having the same model, just a different initialization. Okay, ठीक है, and then you can train multiple different networks which might have a same kind of architecture, same kind of design, same kind of number of layers, same number of neurons everywhere. All the receptors feel the same, except that they were initialized at different locations. And they realize that the output in सबकी फर्क आती है. कोई एक जगह गलती करता है, कोई दूसरी जगह गलती करता है. So what you can do is that you can combine their mistakes together to create an ensemble, and the ensemble results are much better sometimes. Okay, so this allows you kind of a regularization also. Okay, so certain network
to overfit certain amount of data, other network fits overfit certain amount of other data, certain network fits overfits on a certain amount of other data, but combining them together, none of them actually overfit. Okay, combine kar do, they will never be overfitting. I'm not problem will be how I combine them together. So ensemble training ke andar, ensemble learning ke andar, there's a whole area. You guys go and search that. One of the easiest things to do is that अगर 4 नेटवर्क से उनकी आउटपुट आ रही है, उनको नेटवर्क को आउटपुट कंबाइन करके एक और नेटवर्क ट्रेन करा लें, ठीक है? So that can give you कहते हैं rudimentary insight for you guys, ठीक है? और मैक्स को कर लें, ठीक है? मीन को लिंक कर लें. Okay, that is going to help you out in getting one result from the ensemble. Hey, my R's are there, guys. Mohammed, Yes, please conduct the sorry quiz. कितना टाइम दे रहे सर? 3 मिनट के आपने क्वेश्चन इस टाइम जो भी सेटअप किया उसके लिहाज से टाइम मैं आपको क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक. ठीक है 5 मिनट दे देते हैं. That's it. Good. What happens is number one, हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे मिस कर दिया, वो एक बात मिस कर दी, वो ये कि हम लोगों ने we haven't talked about initialization, weight initialization की बात नहीं की, ठीक है? तो weight initialization इसके क्या होता है? So if I'm going to be, so suppose that I have layer, so I have this one layer, इसमें neurons है, and I have this other layer, इसमें neurons है. Okay, assume that this guy has all the weights जिनको मैंने Gaussian से किया था, initialize किया था. Okay, ठीक है? So these weights are being multiplied with the Gaussian, whatever the numbers suppose करने के मेरे पास जहाँ पे जो numbers आ रहे थे, they were also normalized into a Gaussian. Suppose करने, so they were all being input this guy. Okay. And the output of this guy, 0 to 1 numbers being multiplied by 0, 0 to 1 numbers being multiplied by 0 to 1. What I get, the numbers output from here again would be from -1 to actually 1. And actually this standard deviation will decrease. So if I have 2 Gaussian distributions and I multiply the numbers between them, this standard deviation will decrease. It will become much more smaller. अगर सपोज कर लें कि मैंने इनपुट एक लेयर 1 थी, L1 थी, इसके अंदर जो आउटपुट नंबर इनपुट नंबर आ रहे हैं वो -1 से 1 के दरमियान है, ठीक है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन से लिए गए. सपोज कर लें स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने 1 रखी हुई थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने 1 रखी हुई थी. Now this layer 1 also has weights, and these weights are also actually from a Gaussian distribution जिनकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है. Okay, ठीक है? When I multiply these W's with the numbers which are coming here, so small numbers being multiplied with small numbers, and all of those small numbers are less than 1, absolute value is less than 1. This means the output would also be something which has an absolute value from 0 to 1. -1 से 1 के दरमियान होगी उसकी, और absolute value 0 से 1 के दरमियान होगी. But actually they will become much smaller. So one way to look at it is this कि अगर इसकी distribution जो थी वो, अगर इसकी distribution standard deviation इस तरह थी, ठीक है, और इसकी standard deviation जो थी वो भी इस तरह थी, सही है? So this guy, these numbers will have a standard deviation which is very much less than that one. I will have something like this one. Okay, small standard deviation हो जाएगी. Okay, small standard deviation हो जाएगी. Now suppose that I keep making more layers, L2, L3, L4. So these small numbers are being multiplied by numbers which are again from -1 to 1. And they're becoming much more smaller, and much more smaller. So their standard deviation is decreasing and decreasing. And it is actually, you can do this experiment at home also, where you can have a network and you can plot out the outputs of those neurons, and you will see that they are Gaussian, but their Gaussian in standard deviation बहुत छोटी होती जा रही है. ठीक है, numbers they will become so small that it will become near to 0. They will be 0 के आसपास के neighborhood में exist करते हैं. अच्छा, this is the case when you're doing the this is the case जब आप कहते हैं जब आप जो है
कहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे रिलू इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप जो है कि सिग्मॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो सिग्मॉइड में क्या होगा कि वैल्यू 0 से 1 के अंदर हो जाएंगी, कहते हैं तो -1 से 1 के अंदर नहीं रहेंगी, बट दे विल स्टिल फ्री फ्रॉम 0 to 1, छोटी वैल्यूज होती जाएंगी। सो यू हैव अ वेट्स बीइंग मल्टीप्लाइड दिस गाय एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। रिलू के केस के अंदर ये होगा कि आपके पास एक आधी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म ही हो जाएगी। सो आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पहले गॉसियन आ रही थी, ठीक है, रिलू के बाद क्या हुआ, इट विल बी जस्ट दिस वन। So half of the things are just being scaled down to 0. Okay, so I'm actually consistently decreasing diversity in my data. मैं अपनी एक्टिवेशंस की अंदर डाइवर्सिटी को खत्म करता जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। Okay, so one of the guys came up and they said actually what we're trying to look into is something is called covariate shift. Okay, ठीक है, we'll come back to that one. Let me just show you what they were saying. They were saying कि सपोज कर लें कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतनी हो गई है, सही है, तो आप क्या करें, इसको दोबारा से स्केल कर दें, इसको बड़ा कर दें, and we know how to do that. ठीक है, if I give you a random number that are from standard deviation 0.1, you can make them standard deviation 0.2, है ना, इजी से स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, है ना, you can increase the standard deviation of something. Okay, ठीक है, for example, if my numbers are from 0 to d, I can always scale them to -100, -10 to 10. I can always do that, है ना? Why? I will map this 0 to this guy. I can map this guy to this one. Okay, ठीक है, तो मैं मिनिमा को एक जगह शिफ्ट कर दूंगा, मैक्सिमम को दूसरी शिफ्ट कर दूंगा, डिवाइड बाय द डिफरेंस, I get my normalization. Okay, so if something is from 0 to 1 and I want to shift this thing to a to b, what I do, subtract the minima, ठीक है, divide by b minus a, ठीक है, sorry, divide by d minus 0, multiply by a minus b, ठीक है, plus a. Okay, this is going to give me a new normalized values. Okay, इसे हम कहते हैं स्केलिंग करना, ये आप करते आ रहे हैं, नंबर्स आपने पहले देखे होंगे। ठीक है, okay, so what another way to look at this thing is this one. Suppose कर लें कि these neurons here, they were only caring for certain colors. Okay, तो अगर काली कैट्स मौजूद है, जगह से काली है, ठीक है, okay, so if I try my network on this one, I try to test it on this one, or my number of images for the white ones are very small, my network is going to fail. It will not be able to learn. Okay, but point is, regardless if it's a black or it's a white, these don't care. These neurons should not care about it. So if I can handle the color information, if I can balance it out here, अगर मैं इसको पहले neurons में balance out कर दूं, तो these guys will only care about कि parts मिले कि नहीं मिले. They will not care about कि parts मिले, white मिले कि black मिले. Okay, ठीक है? So they will not care about कि color scheme आपने grayscale इस्तेमाल की है कि आपने color scheme और इस्तेमाल की है. They will just care about कि आपने features किस तरह के extract किए हैं. Okay, so they come up with something called batch normalization. Okay. So बैच नॉर्मलाइजेशन मैंने क्या किया, ने कहा कि आप ऐसे करें कि आप जितनी एग्जांपल्स आपके पास आती हैं, आप एक बैच बना लें, जब मिनी बैच बना लें, go through all the values you output from them, combine all of these outputs. Okay, combine all these outputs, their activations which are coming from the layer 1, ठीक है, compute the mean and divide by the variance. Okay, compute the mean and divide by variance. In this way, जब layer 2 में values जाएंगी, they will again have a 0 mean and variance would again be from -1 to 1. Okay, makes sense? Anyone has a question they need to ask, they should do it now. No, okay, so there are some messages. Should I look at the messages? बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। सपोज करेंगे हम सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं और सारे अगर 0.1 भी हैं, तो आई एड अप 100,000 ऑफ देम, आई विल गेट 1000 ऑफ देम, है ना, ठीक है, आई विल गेट 10,000 ऑफ देम, आई विल गेट 10,000 वैल्यू। अगर 0.1 है,
and there are 100,000 and I get the 10,000 output. But think about the sigmoid. अगर sigmoid हो तो फिर क्या करेंगे? आपकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहेगी, है ना? बिल्कुल ठीक ठीक है, आपकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान रहेगी. Problem is not the actual number I'm getting. Problem is that variation of activations I'm getting. देखिए, अगर मेरी एक्टिवेशन की जो आउटपुट आ रही है, आउटपुट जो आ रही है हर लेयर में, उनमें डाइवर्सिटी नहीं एग्जिस्ट करती, वो सिमिलर आना शुरू हो जाती है. तो मेरे से मतलब है कि अगर हर न्यूरॉन की आउटपुट सिमिलर आना शुरू हो जाती है, चाहे वो बहुत वैल्यूज आ रही हो, चाहे बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही हो, if I start getting into that range, then my information is very less. Information is more when there is more diversity. अगर मैं काली बिल्ली और सफेद बिल्ली के दरमियान में डिफर कर पाऊंगा तो शायद बता सकूंगा कि ये अमजद की बिल्ली है कि असगर की बिल्ली है ना? ठीक है, अगर दोनों इंफॉर्मेशन कैप्चर ही नहीं करेंगी तो फिर पता नहीं सकूंगा. ठीक है, मगर अगर मेरी जॉब जो है वो बिल्ली को डिटेक्ट करना है तो आई डोंट केयर को काली बिल्ली है कि सफेद बिल्ली है. ठीक है, देन आई नीड टू रिजॉल्व दिस थिंग बिफोरहैंड. ठीक है, थैंक यू. Okay, so what batch normalization do is that batch normalization allows that the activations जो आपकी आ रही हैं उनकी diversity दोबारा से appear होना शुरू हो जाए. ठीक है, तो one way to do that is to take the whole batch information activation सारे batch की इस layer पे जितनी आ रही हैं, take the mean of that and divide with the variance. Okay, ठीक है, but problem is this one. Okay, problem is this thing. So what we do is that we do this empirically and we normalize every point of whole activation. तो हमारे पास feature volume आ गया, तो उन सब का एक ही mean होगा, सब का एक ही variance से divide करेंगे. Okay, and we can put them wherever we want. That sometimes people put it before the activation, sometimes people put it after the activation, sometimes they put it कहते हैं immediately after the convolutions. Okay, it just depends on what you want to do with them. Okay, the problem is this one, that sometimes you don't need to squash the things, you want to increase the range also, or you want to translate your location. Okay, so you don't want it to mean centered. आप mean centered नहीं करना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हैं. ठीक है, so what they do is that they allow you to they allow you to have this learnable variables जो कि आप एसोसिएट कर सकते, lambda and gamma. Okay, ठीक है. Now lambda and gamma are something which are learnable. Now if lambda becomes this guy, okay, then my squashing function is gone. Okay, think about this, what is going around. This guy is being multiplied by lambda and beta, and what is this guy? This guy is x minus mean divided by the square root of the variance, standard deviation, है ना? Okay, so x minus mean divided by the square root of the variance, standard deviation. So if gamma becomes the standard deviation, then x k इसके साथ multiply करने का मतलब क्या होगा? Is just x minus mu mean. Okay, and what is beta k? Beta k is a transition. If beta becomes the mean, okay, this means it will remove the effect of this mean. Okay, so even if my batch normalization is there and my network decides that it doesn't require batch normalization, it doesn't need batch normalization, it can learn these variables lambda and gamma and remove the effect of normalization. Okay, so these are my mini batch mean and mini batch variance. Okay, we compute the running mean, we keep the running variance, and using those variances we keep updating our parameters. Remember that during the testing, batch normalization layer is there, and we learn the parameters during the training for batch normalization. Okay, so batch normalization requires you some kind of training. Dropout layer doesn't require you that. Dropout के अंदर कोई parameters हम learn नहीं कर रहे थे, hyperparameters set होते. Okay, dropout doesn't depend on your data. Batch normalization depends on your data. So अगर आप network आपने data ऐसे distribute किया है कि एक batch के अंदर सारे के सारे एक class के images आते हैं और दूसरे batch के अंदर सारे के सारे दूसरे class के images आते हैं, then you're going to have a very worse experience using batch normalization. Okay, so batches अगर आपके batch बहुत छोटे, एक image है, दो images हैं, batch normalization is not going to give you a good effect.
ठीक है, व्हेन यूजिंग बैच नॉर्मलाइजेशन उसका इफेक्ट लेना चाह रहे हैं, यूज लार्ज नंबर ऑफ देम, लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस, मिनी बैग बड़ा होना चाहिए आपका, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका डाटा अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपको अंदाजा होना चाहिए कि बैच से आप करने के, अगर आप उस टाइम के ऊपर उस कोवेरियंस को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे, देन यू माइट डोंट, सॉरी, आप उस टाइम के ऊपर वेरिएंस को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो शायद आप बैच नॉर्मलाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है वहां, ठीक है। TS, let's the second